And I request the audience, this evening would be even gracer when you clap and encourage the entire efforts put for the evening. I request Anvesha and Pratikya to take over. खुशी गुनगुनाने लगी है, फिर बीते दौर के किस्से सुनाने लगी है। अल्फाजों से मुस्कुराहट बिखेरने लगी है, तोहफों से फिर वही शाम लाने लगी है। बीते हुए साल की बधाइयां देने लगी है, आने वाले साल का इंतजार करने लगी है और ढेर सारी दुआएं देने लगी है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। संभार से लेकर समायन तक का सफर काफी लंबा रहा है, नहीं? I agree. The times of COVID taught us on how to deal with unprecedented circumstances, boldly fighting the odds, and most importantly, bravely overcoming all of it. After this long fight, I feel so honored to witness such a colorful audience in this elegant evening. Beautiful people with diversities blending together perfectly to celebrate Samayan. जो है संगम कलाओं का, संगम संस्कृतियों का, संगम परंपराओं का, संगम भाषाओं का, समायन Showcasing the collective elegance of young creative minds. करते हैं हम आपका स्वागत अपने पूरे मन दिल से नमन। दसों दिशाओं में गूंज रहा है समायन समायन समायन। So with this enthusiasm, let's call upon the budding nightingales of our school with the welcome song. Give a huge round of applause for our young friends trained under the excellent competency of Dilip sir. सीधा सीधा see her. इधर है मेरी मम्मी। इतनी एम्बैरेसिंग फील हो रही है ना अभी। मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इतने सारे गेस्ट लोग आ रहे हैं। यार तो मेरे को तो कोई दिक्कत मेरी मम्मी की तो इतने सारे लोग हैं। मेरा वीडियो अगर मेरी मम्मी मेरे को नहीं दिखाना वो नहीं पीट दूंगी मम्मी को। कैसे बजेगा कैसे चलेगा? शाम के 10 नहीं होते रात के होते हैं। अरे मेरे को नहीं है भाई, नहीं है, निकाल लो यहाँ से। क्यों हम पे नजरें डाल रहे हैं? कौन से गोरी है चुराना मेरा जिया वाला? तो सामान का किससे लगा? तुम्हारा नहीं लगा? हेलो,
समा I believe this welcome song would have definitely soothed the spirit, should have harmonized the heart, and must have mesmerized the mind. And you see the coincidence when we are presenting the welcome song, three of our dignitaries they joined us right at the welcome song. So I take the pleasure of making know our dignitaries, welcoming them. Sri S.K. Nayak, GM Fuel Maintenance. Please give a big round of applause. Welcoming sir. Sri Y.M. Murli Krishna sir, GM Operation. And amongst us, we have Sri Rafiqul Islam sir, AGM HR CSR. As we are going to present the annual day celebration, then this is the right opportunity to call the head of our family on the stage to bless the students and grace the audience with his inspiring words. Sri K. Sundaram sir, the chief host of the evening, Executive Director, NTPC, come Chairman, School Managing Committee. Respected Sahu Sahab, most respected dignitaries, most respected principal, most respected teachers, most respected parents and my dear students. We are all fortunate here to attend this Samayan program, the annual program of DAV, NTPC Kania. In view of an urgent meeting, I have to go immediately, so I will just say a few words before I leave. सी हम सब किसके लिए काम करते हैं? वी आर ऑल वर्क फॉर आवर फैमिलीज. तो बच्चों को परवरिश एक बहुत बड़ा जमींदारी होता है. जो आदमी एनटीपीसी प्लान में काम करता है उनका बच्चों को देखभाल करने का जो ड्यूटी है डीएवी प्रिंसिपल अच्छा सा निभा रहे हैं. डीएवी स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग स्कूल्स ऑफ एनटीपीसी कनिया. आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर डीएवी टीम फॉर ब्रिंगिंग अपॉन आवर किड्स इन अ नाइस वे, not only in education, sports, all-round performance, debating skills. Every area I have seen there have been n number of efforts taken by our DAV principal. I have seen innovative efforts also in our DAV school, like book reading, like book explanation. They have been instrumental in shaping the career of our students. I would like to wish this program a grand success. I would like to thank all the students for this grand success on this annual function. Last but not the least, I would like to appreciate all parents who have been very instrumental. See, आज की ज़माने में parents जो है बच्चों को साथ साथ पढ़ते हैं. अगर बच्चों को प्रोग्राम होमवर्क मैक्स में कर रहा है, बच्चों भी parents को भी करना पड़ता है. I would like to appreciate the entire parents for coming over here for the program Samayan. I wish the program all the very success. Thank you one and all. Thank you, sir, for adding value to this occasion through your priceless words. उत्कल ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ଚେତନାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ସ୍ଥଳ। ତାଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ସେହି ଭାବନାକୁ
ଆଜିର ଏହି ସମାୟନ ମହାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବରେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्री जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्री जगन्नाथाय ते नमः। বৈশাখে চারু চন্দন চাপে বিজে শ্রী মদন মোহন অনুকূল খিমুঠি ধান গো বৈশাখে চারু চন্দন
চাপে বিজে শ্রী মদন মোহন মদন মোহন গো বৈশাখে চারু চন্দন গো বৈশাখে চারু চন্দন মণি বিমানে গোবিন্দ মণি বিমানে গোবিন্দ বিমানে গোবিন্দ মণি বিমানে গোবিন্দ চৌপাশে ঘেরিଛନ୍ତି সহচরী বৃন্দ চৌপাশে ঘেরিଛନ୍ତି সহচরী বৃন্দ মণি বিমানে গোবিন্দ মণি বিমানে গোবিন্দ 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 उड़ी जा उड़ी उड़ी जा जन्म मुराई जर थरे जाई बुलिया तू दोड़ी ना 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 अरे मो दोड़ी जा उड़ी हो भगते ओ अरे रथ चले खाई खाई ए चक चले खाई खाई जगन्नाथ परा एमिति दियो जगत भितरे नाही हो भगते ओ भगते ओ रथ कहिला हूँ चक कहिला हूँ अरे चाहारी मुंडरे सिंदूर टोपा तारी मरदम हो भगते
ভাদ্রব মাস কৃষ্ণ পক্ষে সকল গ্রহে ছন্তি উচে অষ্টমী নিশি অর্ধ ভাগে রোহিণী নক্ষত্র সংযোগে আকাশে উদে নিশাকর দেবকী উদরু বাহার স্থিরে চাহিলা বসুদেব দেখিলা নাদি মাধব ঝুলিবে তো আজ কুঞ্জে বর জরাজ 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 ঝুলিবে তো আজ ভাদ্রব অষ্টমী বেলা গোপপুরে চান্দ নন্দর বলা গণপতি গণেশଙ୍କ ଖେଳା वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा অসীণ আকাশে জহ্ন অসীণ আকাশে জহ্ন মহামায়া দুর্গা আবাহন धिन
ta dini tak tak de ta tak de tak tak de ta dini tak 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः लक्ष्मी माता छोटा छोटा लक्ष्मी माता छोटा छोटा माटीर मुंडारे धान मुकुट माटीर मुंडारे धान मुकुट मार्गशिरे माण बसा गीत मार्गशिरे माण बसा गीत मार्गशिरे माण बसा गीत मार्गशिरे माण बसा गीत नमस्ते कमल माको सागर दुलड़ी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाठराणी नमस्ते कमल माए अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि बाणुनीति ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ চৈতে ঘট মঙ্গলা চৈতে ঘট মঙ্গলা চৈতে ঘট মঙ্গলা চৈতে ঘট মঙ্গলা ঘণ্টা ঘণ্টা মারে দাণ্ড গোপীনা ঘণ্টা ঘণ্টা মারে দাণ্ড গোপীনা 12 মাসে 13 যাত্রা লীলা 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 If I am not wrong, they deserve a thunderous round of applause. If we inscribe the rich culture of Odisha, it would be inscripted in multiple pages. But with a short span of time, making it witnessable, the way the children presented, it was really mesmerizing. Bless the children with such more performance. Now, we are heading to a very important event of today's agenda. The entire year, its activities, efforts, toils, what have been taken, they are presented
in the annual day celebration. And to take this big event, I would call a big shoulder, the head of our school, beloved Principal Sri L.K. Depta sir, to present the brief annual report of session 2022-23. Sir, please. A delightful December evening to one and all present over here. On behalf of the entire family of DAB NTPC Karnia, I extend hearty welcome to each one of you and seek the blessings of the Almighty for all of us, for the growth, prosperity, and health for each one of us, those who have assembled here to be a part of the big event for the school, Samayan 2022. And on this occasion, welcoming the chief guest of the occasion, Sri Niranjan Sahu sir, District Education Officer, District of Angul, who has been a constant source of inspiration for all educational institutions of the district, trying to implement the vision, policy, which are there for the overall growth of education in the district as an administrator par excellence, as an educationist, and above all, one who loves children. He could not say no when we extended this invitation to him, and he is here. So on behalf of all of us, I extend once again hearty welcome and express my gratefulness for his presence. All dignitaries from NTPC, the head of our family, the chief host, come chairman of school management committee, executive director of NTPC, K.S. Sundaram sir, who has been a part and parcel of each and every activities of the school. In spite of his busy schedule, in his absence here, I welcome him. In spite of his busy schedule, he didn't leave any stone unturned to offer us a befitting start by being there with us in the initial phase. We have got the presence of so many GMs, AGMs, all executives of NTPC, the officials of Block Education Officer, all my dignitaries and friends from the neighboring schools, and all parents and my beloved children, people from media, and the well-wishers of the school. It is my pleasure to welcome each one of you and would request all of you to pay attention to the report card of the school. Normally, it is considered to be a very boring affair for the audience. I don't mind confessing that. But I assure you, dear August gathering, when we present the achievement reports of the schools, we don't simply focus on the children. We focus on the parents, focus on the community, focus on the teachers development program. It's not about simply beating the drums for the school, rather a collective efforts, and it becomes, when that is the objective, it becomes everyone's duty to pay attention to the achievements of the children. As and when required, I expect you to clap also. I don't mind requesting you, because if we are here for a cause. We love children, we love the future of the nation, and to encourage them and to inspire them, it is our duty. At the outset, a warm wishes for a blessed and cheerful 2023. Good evening, one and all. Distinguished dignitaries, in fact, after 2 years, we are getting this opportunity to celebrate. So, usually the nature of annual report is to comprise the appraisal of a session. But to remind you all that we are meeting on such a grand forum after 2 years due to the advent of Corona. Hence, our annual report will make a wise verse of our unvanquished progressive march coping with the crisis, starting from tuning the condition of the school to the SOPs received from different competent authorities, I mean COVID SOP.
very meticulously we did follow. This could have been a thing of the past, but it is very pertinent to mention here the kind of information that we keep receiving from our neighboring localities, neighboring countries. In this occasion, again, I would like to remind all of us that we cannot be complacent. In this occasion, once again, I would like to remind each one of us that we need to try our level best to maintain neatness and cleanliness so that we do not need to face another pandemic of that kind. It's our commitment to proselytize the student with a dignified approach where all children, they come out with flying colors. These 2 years of trying times have affected academics the most. Despite this, the result of AISSE, that is standard 10, and AISSC, that is standard 12, is solacing enough. In the session 21-22, 58 students appeared in AISSC, in which we could achieve 100% pass result, and all the students passed out in first class. 25 students out of 58 scored more than 90%. Ms. Ananya P scored 98.4% and topped in the school in AISSC with a rare accreditation of perfect 100 on 100 in mathematics and Sanskrit. As per the normal trend of the school, on the annual day, all these special achievers, that means the toppers of the school, we felicitate them. But this time, we have already completed that. That's why we are just appraising you about the achievement instead of calling them, because a grand felicitation was done for all such achievers. I feel happy to announce few more names who have scored 100 and 100 in different subjects. Master Akars in mathematics and Sanskrit, Ms. Hansini Saw, Ms. Sia Sagnika Sahu, Master Amandeep Das, 100 out of 100 in Sanskrit, Master Nandadulal Raul, Ms. Swayampragya Sahu, Master Tanmayanand Sahu, Master Huip Kumar Behra, and Master Ashirvad Sahu, 100 out of 100 in mathematics. Similarly, in the AISSC, out of 50 students, 5 students scored more than 90%, and Ms. Priyanka Dhar topped in the AISSC, scoring 95.2%. This is because of the incessant endeavor of the teachers and students, those who are rightly boosted by the parents, and their contributions back at home, our efforts here in the school, and the relentless efforts put by the students help us in bringing such laurels for the school. The school got placed in the outstanding category with 84.36% KPI in the AISSC. To induce the young minds with love for books, we organized 2 editions of Literature Conclave during Gandhi Jayanti and National Book Week, wherein, amidst the personnel of literary competency, nominated CBSE budding authors and members of Readers Club delegated sessions like panel discussion, book review, storytelling, seminar talks, etc. All these were organized, and the detailed annual report will be published in the e-report form, which will be duly uploaded in the school website, so that the entire congregation, as per their requirement, as per their interest, they can go through that. And here I am just touching the few achievements of the school. The staff enrichment program, if you talk about this session, our school was entrusted as a training venue from 8 July 2022 to 10 July for the science teachers of the entire state secondary level, and the entire teachers of the Odisha zone, they participated in it. And I feel glad to announce that Mr. Bhagwan Rao, TGT Biology, Mr. Akhil Akhtar, TGT Hindi, Mrs. Somali Mohanty, PRT English, Mrs. Ankita Patra, pre-primary teachers, they were all assigned as the master trainers because of their expertise in their respective classes, as well as in teaching their peer group as teachers trainer. We have PTM, PTCC, PTSC, Sexual Harassment Committee, Grievance Redressal Cell. We are specially thankful to all the parents member
those who have been a part and parcel of all these committees. To strengthen this approach, we constituted the PTCC under the able guidance and supervision of one of the representatives from HR department. Our PTCC comprises 14 parents representatives starting from LKG to standard 12, one class being represented by one member, and in a very democratic approach, all the members of PTCC they are chosen, where 7 nominated members would be teachers member, they are the part of that, and most of the activities, the annual school development plan, they are being chalked out by the PTCC members, then that is presented before the SMC members, school management committee, in tune with the guidelines by the competent authorities, and finally all the developmental plans are chalked out. Like any other school, we do have all observations. To cut short, I am not getting into the details, just I am referring to some of the special events like Fit India Week we celebrate with great spirit and zeal, and our school has been adjudged as the champion school in the entire state, and they became the state champion and finally attended the national level, where in the semi-final they were defeated by a team from Punjab. Still, the Ministry of Sports and Youth Affairs awarded our children with 2.5 lakhs of cash prize to the school, 25,000 to the children, those who participated in it. So, like this, different new things like Grandparents' Day, relay for family relay race, we have balloon balancing race for parents. Apart from all the sports events, for parents also there were certain events, and we have literature conclave, which has been a new milestones, you can say, as far as enhancing reading habit is concerned. All sets of observations which are normally expected to be performed in the schools, and we are so fortunate with the help of NTPC management, we are able to conduct varieties of competitions which are beyond the normal CBSE school curriculum, which are beyond the normal state government school curriculum. So here, anybody who is studying, they are getting multiple opportunities to be a part of varieties of competitions. We are so fortunate that this school manages to give a platform to participate in activities which are meant for the state government schools. We are so happy that all sorts of activities and events are also extended to the schools like this, where they participate, they bring laurels for the school. From NTPC side, all competitions they participate. DAV has its own activities. Recently we conducted the zonal level handball, and our children, they participated in the national level handball, national level kho-kho, national level badminton as the state champion. In this way, there are several achievers only just for the sake of encouraging our children. Wherever names are essential to be read out, I am just reading out the names so that each one of us will be feeling proud of the children, and the children themselves will also be equally inspired. With that motive, I am trying to make it very brief. The entire report will be available in the school website. However, I would like to appraise the worthy congregation regarding some budding talents of our school who have brought laurels for the school, for the locality, for the state. Ms. Sibansi Rai qualified JEE Main and Advanced and is presently pursuing BTech in Civil Engineering at IIT BHU Varanasi. Ms. Ananya Devnath qualified NEET and is pursuing MBBS in Kolkata National Medical College. We are only talking about the successful rank holders, those who have succeeded in getting admission in prestigious colleges, though the rank holders are many. I am just giving you a brief idea about those achievers. Ms. Akanksha Patnaik is pursuing BTech in Metallurgical and Material Engineering at NIT Rourkela. Master Somendra Kumar Mohanty is pursuing BTech in Agricultural Engineering and Technology in OUT Bhubaneswar. Master Jagannath Behra is pursuing BTech in Electrical Engineering in IGIT Sarang.
Master Likan Kumar Sahu is pursuing BTech in Computer Science Engineering in Government College of Engineering. Master Shreyas Samantraya of Standard 10 and Miss Hiteshi Samantraya of Standard 6 successfully completed the district level Vidyarthi Vigyan Manthan and got qualified to appear in the state level. I would like to appraise this August gathering. Vidyarthi Vigyan Manthan is one such platform where the budding scientists are groomed with special focus by scientists directly, those who do the hand-holding for the children, and to acquire that status, they need to pass through a very rigorous exam, and then they are exposed to a camp, and the scientists directly, they handhold the children and they participate there. Accordingly, Ms. Aradhya Pradhan of Class 2 bagged international rank 1 in the National Science Olympiad. Can you have a round of applause for this child prodigy, Aradhya Pradhan of Class 2? Among the entire nation, we have extended finance course very meticulously and all. Accordingly, Ms. Abhya Sinha, Kumar Sahu, and Master Shreyas Samantraya were specialists, and they are being groomed by SPSC Regional Office as an exam center for AISSC and AISSC. In tune with this, our two competent teachers, Mr. Jyotiranjan Das, PGT English, and Mr. Jyotiranjan Panda, PGT Physics, were assigned as CBSE observer to conduct the exams at UAVS Pallada and St. Joseph School, Khamar, respectively. When the school is considered as a trust over the school, then only organizations like CBSE, they allow the school to conduct examinations of higher statures like CBSE, and the senior faculties, they are also given the chance to administer the exam in another center, CBSE center. Session 21-22 has been a phenomenal year in the field of core scholastics. As I was informing, Master Whip Kumar Behra and Master Kanisk, they were the two jewels. Let's have a round of applause for them. They backed us the Fit India Quiz Champions Trophy. This time, the school was entrusted to host zonal level handball tournament for boys, and our students, they stood as a champion, and the school team represented Odisha at the national level held at DAV Hehal, Ranchi, Jharkhand. Similarly, having bagged the championship in the girls Kho-Kho gold medalist in the DAV zonal meet, the school team, they would head for DAV Jalandhar, Punjab tomorrow itself. The entire team of girls Kho-Kho and the entire team of girls badminton, they are going to represent the state of Odisha in the national level, which is going to be held in Jalandhar, Punjab. And let us all clap for them and send our best wishes so that they emerge as national champions. Master Karthikeya stood runners-up in the Under-9 Odisha State Badminton Championship held at Biju Patnaik Indoor Stadium, Bhubaneswar. Master Anirvinaya Pradhan bagged the Under-15 district level badminton doubles championship held at Nalco, Angul. Ms. Priyanka Priyadarshini Sahu bagged silver medal in high jump girls in the DAV zonal level sports meet. I would like to appraise this August gathering that the national or zonal level sports meet which are conducted under the aegis of DAV College Managing Committee, New Delhi. It has got the accreditation of SGFI. Whoever receives a certificate, that certificate is widely acclaimed, nationally acclaimed, and they get, in addition to being felicitated, they get special privileges in different forums. In the meantime, we are very much happy to send the girls team to the national level. Master Ankit Rai got first position in the district level essay competition organized by the Samvad Patrika, which was patronage, we can say,
by His Excellency Governor of Odisha, and they got specially felicitated by him. Darshana Jain and Desna Jain and Adyasa Sahu won a cash prize of rupees 25,000 in the grand finale of Smart India Hackathon. In these days, programs like Inspire Manak, we have 2 children, those who have been felicitated, those who have received cash prize. In the same way, as a part of Innovation Ambassador Program, this Smart India Hackathon competition, where children, they are expected to present their app, they are expected to present their concepts, they are expected to present their synopses, where they can be a future entrepreneur. In order to enhance such entrepreneurship skills, in order to enhance varieties of skills, new schemes are being developed, and all CBSE schools are part of that. And anytime we get any information related to that, where our children can flourish, they can shine, we don't leave any stone unturned in ensuring that they are groomed well. No doubt, the privileges and facilities which are available at school, we are fortunate because they are being backed by a massive Maharatna company like NTPC. But all these achievements, if you try to find out the stakeholders, the real persons to be credited, naturally, we need to give a lot of kudos, lot of appreciation to the parents, because back at home, parents, they have real support. That's the reason that in a combined year, we are able to achieve such laurels. Can you have a round of applause for all parents? Thunderous round of applause. This will motivate each one of us, and we can excel higher. As I have been telling, be it teachers enrichment program, students enrichment program, that means the infrastructural communication still in the process. The management is so considerate. In our pipeline, we are going to have, she'll get chance, which will be a part of our innovation block. We have already constructed touchless hand washing panel. All the safety norms which are to be followed in the school system, they are being very meticulously followed. We do have the proposal to have an acoustic, that is soundproof multipurpose hall. The process is already on, the false ceiling is already completed, and the management is very sincerely working on it, so that very shortly we will be in a position to have a soundproof acoustic hall. We are in the process of having a basketball court. We have probably the largest, I don't hesitate to say, in the nearby vicinity, if you go and compare the infrastructural facility, the area that we have, probably it is one of the largest. We have one complete athletic field exclusively with 200-meter track, separate area for jumping events, separate area for track events, and exclusively a football field is there. We have got a very large area, and that is being constantly monitored and maintained by the authorities, representatives of NTPC, and we are very hopeful the way the management is progressing with everybody's cooperation, we will be in a position to give and offer more number of opportunities like that. For everybody's convenience, some of you might have faced little bit of inconvenience while keeping your vehicles. We do expect all of you to follow the protocols, to follow the norms, safety norms, especially while parking the vehicles. We often tell this to the parents that when you are coming and dropping your children, please ensure that you are not blocking the road. I may kindly be excused with due permission of the dignitaries. I am getting a little bit of greedy. When I get such a large gathering, I am taking the advantage of this situation. Certain things I need to convey. That's why I am making use of this platform. And I am requesting each one of you that infrastructural facilities are getting developed gradually. But we must know how to use it. Recently, we had given the plan that there should be a second exit gate
and very promptly, a second exit gate is almost in the pipeline, almost 90% it is over. Shortly, whenever we will be having program like this, we have space constraint, we do understand, we can have it in the field. If we are having any program here, we expect all of you to park your vehicle there. So second exit gate had been a requirement in the school and it is now a reality. Can you have a round of applause for all those executives, those who are working hard to ensure that all facilities and infrastructural facilities are available, be it civil related work, be it electrical work, be it IT related work, and all these things are being coordinated by the HR department of NTPC, and the school is running as per the norms prescribed by the state government Department of Mass and School Education. DAV Institute has its own formats, rules and regulations. So the children are in safe hands because all these organizations, their basic motto is the improvement of the children, the shaping of the future of the nation. These are there in the pipelines, and all the achievers, every now and then we have felicitation program. We are so fortunate, we call our dignitaries, they take a lot of interest being associated with the school activities. So we are really having a very fortunate time over here where so many people are really interested for the children. Purposefully, I don't want to linger. Certain names were to be announced in case I missed out, because you are very particular about only informing the unique and special achievers' name. Otherwise, the number is, there are n number of achievers. Each one of our children, they are one achievers, and they do have the potential, and we believe in NCLB, no child left behind. Giving exposure to all children. If all children need to appear the exam, it is mandatory. We ensure that all children need to play in the annual sports. In the same way, in case of co-curricular activities, annual event, annual day function, all children need to participate. Thus, every child is special and every child must get that special attention, that special focus, that special care and sensitivity. We try our level best to ensure that, and we are so happy. And on this particular day, on behalf of the school community of DAV NTPC Kornia, I extend my heartfelt thanks and gratefulness to each one of you present here for your contributions, for your valuable time that you have spent to listen to some of the glimpses of the achievements of the school. Thank you. Have a nice day. And I expect all of you to be with us till the last event is over. In the meantime, I take this pleasure to invite Mr. Ashok Sehgal sir and Renu Sehgal ma'am, GM O&M. We are expecting them in the beginning. They missed first part, and we do expect their presence till the last. Thank you. Thank you, sir, for making us aware vis-a-vis with the achievements of our school. A special thanks to all the parents and teachers for their support and encouragement, which led us to touch the golden heights of success. Let us all pledge to add more such feathers on the cap of DNK for the upcoming session. खुशियों पे मौज की रवानी रहेगी. जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी. हम यूं ही आज के शाम में 4 चांद लगाते रहेंगे. अगर आप भी हर कार्यक्रम के बाद तालियां बजाते रहेंगे. Now be ready to take the pleasure of a celestial journey with our little stars who would pave you beyond the cultural horizon. To begin with, let's call upon the tiny tots and blooming buds of our school with their performance. Thank you.
तो होले की कोई भी समाने हाँ हेलो 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 ला 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 गुड इवनिंग हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर एंजॉय आवर प्रोग्राम अरे तुम इतने उदास क्यों हो थक गई हूँ मैं ऐसा कौन सा तीर मारा जो तुम थक गए सब मुझसे बोलते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा तुमसे बताती हूँ डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं पढ़ाई करूं बातें सुनूं ये करूं वो करूं ये सब सुन सुन के मैं थक गई हूँ क्या ये तुमसे हो पाएगा शक्ति क्यों नहीं हो पाएगा हमसे पर मम्मी पापा को कौन समझाएगा अरे मम्मी पापा के हेल्प से ही तो सब कुछ हो सकता है हम दुनिया को उंगलियों पर नचा सकते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इसका मतलब मैं कुछ समझा नहीं अब समझाए क्यों चलो दिखाते हैं आप सभी भी देखिए हमारी LKG और UKG बच्चों का धमाल कार्यक्रम हमारी उड़ान झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में मन में जो सोच ले हम झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में मन में जो सोच ले हम आया है दूर तक देश अपना जाएंगे दूर तक हम देखेगी दुनिया जलवे हमारे यूं जगमगाएंगे हम बीते कल से हमको सीखते जाना है नए कल की कल कल से पल पल सजाना है बीते कल से हमको सीखते जाना है नए कल की कल कल से पल पल सजाना है सूरज अपनी मुट्ठी में है कुल बुला रहा नया
को नचाएंगे हम, देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोले पर खोले पर खोले पर खोले पर खोले पर खोले खोले पर खोले पर। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। ऐसी ऐसे खड़े है जाना पड़े ना कम हमको तो, ऐसी सजते अड़े जनूनी बड़े अगर के कबूल। एक जिंदगी मेरी सवाइशा, एक एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी सवाइशा, एक एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी सवाइशा, मुश्किल हमें रोकना। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा। मैं पूरी करूँ जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा। मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। अब सालों में जीना या मिसालों में, जवाबों में जीना या सवालों में, सब हाथों में है तेरे तू जाने। एक राय देता हूँ जो तू माने, जिंदगी को हकार दे, जिंदगी को हकार दे, जिंदगी को हकार दे, सोच को जवा कर दे। जिंदगी
Wow, what's an amazing performance by LKG and UKG students. Please have a big round of applause for the young kids. नमस्ते, मैं अन्वी बेहरा। नमस्ते, मैं शान्विका सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो आइए मैं आप सभी को अपने देश के बारे में कुछ बताती हूँ। हमारी कंट्री इंडिया एक स्वतंत्र देश है, जिससे हमें किसी भी धर्म को मानने की अनुमति है। हमारे भारतवर्ष में सभी धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। फ्रेंड्स, आपको पता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज द बेस्ट। तो आइए आप सभी के सामने कम्युनल हार्मोनी पर एक डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हमारा ये क्लास 1 के ग्रुप। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Jesus, my Lord, I never forsake you. Jesus, my Lord, I never
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। अरे मनोहर भाई, इस जगह पे तो मंदिर ही बनेगा, भगवान राम का मंदिर। दिन रात आरती, दिन भर पूजा, मजा ही आ जाएगी। अरे भला ये भी कोई मंदिर बनाने की जगह है? यहाँ तो मस्जिद बनेगा, मस्जिद। एक एक नु काट डालूंगा, ना मंदिर है ना मस्जिद है, एक गुरुद्वारा बनेगा, गुरुद्वारा। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, झांकी कहीं धुन एक है, भाषा कहीं सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है, जानो। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। बूंदों से बनता सागर, फसलों की धानी चादर, देखा है हमने ये सब यहाँ। ओ पर्वत की चोटी चढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना, सीखा है हमने ये सब यहाँ। ओ सोने की चिड़िया हो या मिट्टी का घरौंदा, सबनों का अपना है जवान। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, इस देश की हर गाथा है माँ। हर लफ्ज़ ये कहता है, हर लफ्ज़ में रहता है, हर सांस में बहता है हिंदुस्तान, हर सांस में बहता है।
DAVians of Kanya proudly celebrate Veer Bal Divas to pay homage to the great valor and supreme sacrifice of Sahib Jada Jorwar Singh Ji and Sahib Jada Fateh Singh Ji, the younger sons of the 10th Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh Ji, on 26 December 1704 at the tender age of 9 and 7 years respectively in their quest for justice. Salute to all the Veer Bal. After this marvelous performance made by Standard 1, I take the opportunity to invite on the stage the chief guest of the occasion, Sri Niranjan Sahu Sir, District Education Officer, Angul, to address the gathering. So please. Good evening to all. Respected principal of the institution, invited dignitaries of NTPC, dear students, friends from print media, electronics media, and all the parents, those who are inclined towards education, and all others. The staff members of the educational institution. This is the annual day celebration of this man-making factory. Though NTPC is here, this is also a factory who makes man. So, in order to bring out the innate potentialities of the students, throughout the year, the students achieve in special activities. You might have all seen it through the reporting of the principal. I never want to stand in way of your entertainment. Generally, you all have come to enjoy the performance of your children. Just three things I want to say. Being the head of the education in the district, I want to focus on educational institution, the students, teachers, and in general, the total education. First, I want to say that the students are the tender plants of this garden. They should be nurtured well. They should be given due attention. Dear students, it is your duty to be disciplined, to pay regards to your parents, to your teachers, to your superiors. You have to obey them because they are a reorganized and coordinated experience. To guide you can make you a successful man. Being a doctor, being an engineer,
being a scientist is not sufficient, is not all of your life. But you should be a man like man. What I observe, the total religion of humanism should be adhered to. There should not be any deviation in it. And being a student, you should be disciplined. You have to obey the rules and regulations of the student, and simultaneously you have to work hard, because hard labor has no substitute at all. Be industrious. Books should be your best friend. Now, this is the age of science and technology. Your continuous comprehensive labor can bring you to any extent you like. So, I wish you all to be a colorful butterfly by dint of your hard labor. And secondly, as per our esteemed President of India, APJ Abdul Kalam, dream high. And in order to fulfill your dream, you have to labor hard. You have to seek the guidance of your superiors. So never try to waste time. Be disciplined, be humble, be respectful to all your superiors. Secondly, I want to speak something. एटी जो शिक्षक माने अछंती मु सेमानक उद्देश्य रे कहि रखे शिक्षकताटा केबे हेले वृत्ति नुह एहा एक व्रत. This is not a profession, this is a mission. So your continuous penance, perseverance in order to earn more and more knowledge is essentially required. आपण मानकर निरवच्छिन्न निरंतर प्रयास ज्ञान आहरण पाई सबु बेले उज्जीवित होई रहू. जो नूतन ज्ञान आहरण करी आपण माने ए कोमलमती शिशु मानकु पथ प्रदर्शन करिवे, दिग्दर्शन देवे, सेमानंक पाई आपणकर समयटा श्रम सबु किछ विनियोग हो. तेणु एठी जो मनीष तैयारी कारखाना रे कुनी कुनी छात्र छात्री माने आसुचंती आपण मानकर अनुभूति को, आपण मानकर परिपक्वता को, आपण मानकर ज्ञान को आहरण करिबा पाई आपण माने जत्पर नास्ति चेष्टा करंतु. कष्ट आपण मानकु हेई पारे. ओडिया रे गोटे कथा अछि, राजधर्मर आपण को पालन करिबा को पड़िबो. तनु पछे जळे विद्युत अनळे जल दाने घन बाध्य, सुख तेजी राजा पालिले परजा तेबे से परमाराध्य. तेणु जहाँ आपण शिक्षा देवे ताहा निराट सत्य आ विराट वास्तव हवा दरकार. यू हैव टू गो टू द ग्राउंड रियलिटी. वर्तमान विज्ञान कारीगरी कौशल जुगरे आपण मानकर 6टी लक्षण निहाती रहिबा दरकार. 6 सालिएंट फीचर्स ऑफ an effective and efficient teacher. One is the perpetual dissatisfaction, दिव्य असंतोष रहिबा दरकार. दिव्य असंतोष जेते ज्ञान आहरण कले आपण केबे हेले सैटिस्फाई हेबे नाही, संतोष लाभ करिवे नाही. दुर्बार ज्ञान पिपासा आपण मानकर रहिबा दरकार. एंड सेकंड वन इज इनमालिएबल इंटरेस्ट, अनमनीय श्रद्धा रहिबा दरकार. आग्रह रहिले ही आपण अधिक रु अधिक ज्ञान आहरण करि परिबे. तृतीय लक्षण होची एसिमिलेशन, तल्लीनता. गेट एसिमिलेटेड, गेट इन्वॉल्व and try to forget your own existence. तल्लीन हो जातु नूतन ज्ञान आहरण करी वितरण करिवारे. एवं चतुर्थ लक्षण होची आपण मानकर संस्थिति निर्धारण, accommodation. You try to be the person with a radiant personality from minimum level of learning to mastery learning, so that you can establish your own existence. याकू कहा जाए संस्थिति निर्धारण, accommodation, साइकोलॉजी रे कहा जाए.
most vital self realization आत्म उपलब्धि दरकार जहाँ समाजर मंगल रे आसीबो try to learn, try to acquire knowledge whichever is beneficial to the society, not detrimental to the society. जो ज्ञान समाजर मंगल रे आसीबो पिलार मंगल रे आसीबो मानव जातिर मंगल रे आसीबो सेही भली ज्ञान आपण आहरण करी वितरण करंतु ये इंटरनालाइजेशन आपण मानकर रहिबा दरकार एवं षष्ठ लक्षण होची आत्म परिप्रकाश सेल्फ एक्सप्रेशन जेतेबेले आपण आहरण कले तार वास्तवता को अनुभव कले whenever you acquired knowledge and internalized the beneficial components of that knowledge you can express then that is known as self realization. Though it is very stupendous, it is a Herculean task, you have to do it continuously because a teacher earns not physical or material gain but what he earns that is purely non-dimensional. मात्रा विहीन स्वार्थ पछरे आमे समस्ते दौड़ीचे से मात्रा विहीन नॉन डायमेंशनल इंटरेस्ट टा होची सोशल कॉग्निजेंस. To be an effective and efficient teacher, you have to continuously keep your perseverance so that you can get innovative idea that can be transmitted towards these tender children. And third one, so many inclined, radiant personalities, those who like education. We all know the destiny of India is being shaped in her classroom. Whatever we are the product of education. Wherever we are, that is only due to education. That's why the destiny of India is being shaped in her classroom. The tender children are there. All parents are here. So we have to wholeheartedly extend our cooperation for the development of this educational institution. Our cooperation, our valuable suggestion is essentially required to run the institution with its full pace. So my point is, एइटी मु गोपबंधुंकर गोटे उक्ति उपस्थापन करने को उचित मने करुची. बिना श्रम जत्ने होइछि के पार दुस्तर अनंत भव पारावार नैतिक साहसे होइण साहसी कर्तव्य रूपिणी तरी परे बसी विवेक आहुला निरंतर मार तेबे भव सिंधु होई जीव पार. जीवन जिज्ञासार लंबा पथरे ये जो कुनी कुनी छात्र छात्री माने आज पाद देइचंती ए मानकु प्रत्यक्ष दिग्दर्शन देई आगो को बढ़ेबार गुरु दायित्व शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक अभिभाविका शिक्षा प्रेमी जनसाधारण आम समस्तंकर रही. केवल प्रशासनर चारिकांत भितरे आबद्ध न रही आमको आखि खोली देखिबार अछि ए मनीष तैयारी कारखाना रे जो कुंभार माने अछंती ए कंचा कादुओ को दली किभली भाव रे रूप देख दउछंती. आंभ मानकर अनुभूति आंभ मानकर ज्ञान आम मानकर आप्त वाक्य निश्चित ए शिक्षानुष्ठान गौरव को वृद्धि करिवो. दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू स्मार्ट क्लास. दे आर यूजिंग e-library. Up-to-date science laboratories there for experiment. So my point is, without any hesitation, without any protest, we should all come forward for the holistic development of the educational institution, simultaneously the integrated development of the tender children. It is the duty of a
conscious citizen to transmit the knowledge or to remit the innate potentiality out of experience with him or her for the betterment of the students. So I think एटी आमे समस्ते एकत्रित होइचे आम पुओ झियो मानकर अंतर्निहित प्रतिभार विकास देखिबा पाई आमे समस्ते आजिर दिन रे विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड फार्म कमिटमेंट and with neutrality we should go forward. एक सकारात्मक मानसिकता अंगीकारबद्धता एवं कर्तव्य निष्पादनर बलिष्ठ तितिक्षा को दृढ़ भाव में ग्रहण करी ये मनीष तैयारी कारखानार आंगिक सौष्ठव को विकास करी यार गुणात्मक दिग एवं परिमाणात्मक दिग को समग्र राज्य रे देश रे जाति रे जदि आमे वितरण करि परिबा ताले शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करिवार दायित्व ठीक अछि बोली हमको अनुभव करिया पड़िबो। एनटीपीसी कर्तृपक्षक द्वारा ये विद्यालय गठन करा जाइछि। मो विस्मयाभिभूत पिला मानकर कुनी कुनी छात्र छात्री मानकर नाच गीत देखी आहुरी अधिक समय धरी उपभोग करिवार अवशोष मोर रही जाउची किंतु कर्तव्य ताड़ना रे आमे अधिक समय रही पारु नाहु। तेबे एठी जो माने उपस्थित अछंती अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री बा अवसर प्राप्त ये टीचर नेवर ग्रोज ओल्ड बिकॉज ही कीप्स हिज परसिवरेंस कंटिन्यूअसली जेहेतु से तांकर साधना को कंटिन्यूअस भाव में जारी रखि पारुछंती ए टीचर नेवर ग्रोज ओल्ड। एटी मध्य अवसर प्राप्त शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी भी थिबे तेणु एई मानक उद्देश्य रे मु कहि रखे समाजर कोण अनुकोण रे निजर जीवन जीविका निर्वाह सह पुओ झियो मानकु जणे सच्चा नागरिक करी गढ़ी तोलिबार जो पदक्षेप आपण माने नउछंती ताकू मजबूत करंतु। आपण मानकर समय काढ़ी ये अनुष्ठान पाई किछि समय दियंतु। उठ शूद्र मुनि केते काल तुनी होई रही थिबा आउ ए एनटीपीसी अंचल रे ज्ञानर प्रदीप जळु थाउ दाउ दाउ। वंदे उत्कल जन। Thank you very much, sir. I request the chief guest to stay a while. Sir has rightly said that as parents contribute in a complete education, a complete foster of a child, so we also take this opportunity and do follow that in near about all the events, all the actions and practices that we go for. So in this connection, I would like to tell, when we are taking serious decisions of school development program, we call for the parents to make a judicious decision. At the same time, when it comes to fun and entertainment, the parents are no less back in also exhibiting that. So certain such exhibitions we have witnessed during the celebration of the annual sports day. So I would like to invite on the stage Shri Ashok Kumar Sehgal sir, GM O&M, and I would request Shri DK Pandey sir, AGM HR, and Shri Satrughna Behra sir, AGM Project. And in the meantime, ED sir has joined us. I request the AGM HR sir and AGM Project, as they are members of School Managing Committee, to escort the Executive Director, Shri K. Sundaram sir, GM Project, Shri RM Das, SK Naik, GM Fuel Maintenance, OIM Murali Krishna sir, GM Operation, and I would also request Shri Fakir Mohan Sahu sir to join with us as the representative of the Regional Directorate, Devi Institutions, Odisha Zone.
So heading to this felicitation ceremony of the parents, we had family relay race in the annual sports day of phase 1 for kids and phase 2 for standard 3 to 12. So I would take the opportunity to invite the first prize winner, parents of Satvik of class 2B. Satvik and his beloved parents, please come up on the stage. May I request Satvik and his parents, Master Satvik of class 2B and his parents, to come up on the stage and receive the trophy. They have been adjudged as first in the family relay race organized in the kids block. Master Satvik and his parents, they have come up and I would request Miss Anvika of Standard 1B and her beloved parents to please come up on the stage and receive the second prize. In family relay race. Anvika and her parents to come up on the stage to receive the second prize in family relay race. Anvika and her parents. Anvika and parents, please come up on the stage. I would request Kashvika and her parents to be ready by the stage so that we can avoid the inconveniencing delay. I request Kashvika and her parents to join us on the stage and receive the third prize, family relay race. Now we have the prize winners of standard 3 to 12. Also similarly we had family relay race. I will request the parents of Priyanka Priyadarshini Sahu of class 11. Priyanka Priyadarshini Sahu and her parents to come up on the stage and receive the first prize in family relay race. Priyanka Priyadarshini Sahu and her parents. I would also request Maria Pradhan of class 10 and her parents to come up on the stage and receive the second prize in the family relay race. Maria Pradhan and her parents. Maria Pradhan of class 10 and her parents, please join us on the stage to receive the second prize of family relay race. Maria Pradhan and parents. Followed by Maria, I would request Anisha Sahu and her parents. Anisha Sahu of class 10 and her parents. To come up on the stage and receive the third prize in family relay race. So I would tell the worthy community of parents that these are those parents from this crowd, those who have broken all the chains of workload, the stress and anxiety of working nature, mother,
breaking the boundary of the kitchen. So can we have a big round of applause for the fantastic fathers and merillious mothers? So in one hand, when we are felicitating the children and the parents, in the same way we call upon 3 staff members of our school. I would like to invite Mr. Udit Kumar Garnayak, Senior Faculty Department of PHE. He is going to be honored with the award of the most enterprising teacher to have enabled the students in securing 85.72%. This is the subject average in the subject of for the highest positive deviation of 7.27 among all other subjects in the AISSCE, that is meant for class 12, in the session 21-22 conducted by CBSE. May I take the opportunity of inviting Madam Udit Garnayak, we have next Mr. Samir Shukla, the Chief Librarian. He is going to be honored with the award of the most resourceful teacher for his praiseworthy involvement in undertaking multiple assignments for the overall growth of the students. Mr. Samir Shukla, please give a big round of applause. His involvement is really praiseworthy in all directions and assignments of different capacities. And tune in this, I would invite Mr. Vishwaranjan Nayak, Group D staff of our school. He is going to be honored with the award of the most committed staff for his hard work and creative involvement in multiple activities of the school. May I call upon Mr. Vishwaranjan Nayak on the stage to receive the trophy of most committed staff. After segmentizing the parents, teachers, and the students, when it comes to school, we have just 2 awards to be acknowledged for. We have the overall champion house, and for this, I may call upon the house master and mistress, the captain, vice captain, and the house representative of the Atharva Sadan, the overall champion, house champion, Atharva Sadan. May I call upon the house master and mistress, the house captain, the vice captain of the house representative, and the house coordinator. So we have got 4 house system following the sacred Vedic philosophy, Rig, Yajur, Sama, Atharva, and in this system, the entire school is divided into 4 segment of houses, 4 sadhans. I again call out the house master, house mistress, captain, vice captain, house representative of the Atharva Sadan. On the basis of discipline, academic performance, calisthenic education, this is being done. I again call out the house coordinator, the house master, house mistress, captain, vice captain. We have the overall runners-up, and that goes to Rig Sadan. Rig Sadan as the overall runners-up. May I call upon the house master, house mistress, the captain, vice captain, and the house representative of Rig Sadan. As I told, tuning with the Oriental and Occidental philosophy, this Vedic philosophy has been developed and to be incorporated among the students to bring unit
team spirit, and above all, high morale. From the bottom of my heart, I congratulate all the winners. This is a running shield. Every year we will be felicitating. And from the core of my heart, I thank the dignitaries. Now we have a small felicitation for the chief guest. It has been customary with us, Atithi Devo Bhava, and believing in that philosophy, believing in that principle, we take this opportunity as this is Sri Niranjan Sahu sir's maiden visit to our school. We are really overwhelmed at your presence. I request the chief host of the evening, Sri K.S. Sundaram sir, to offer the token of regard. We are having. Thank you very much, all the dignitaries, for taking the pain of making this felicitation program a successful one. Now with this, I request the budding performers of Standard 2 to come forward and present their event. Now over to the student participants of Standard 2. Good evening to everyone. Hi, I'm Kashmir Kalangnathan. Hello, I am Pratyusha Pradarshini. In the world of innocence for the tender mind, learning should be fruitful, enjoyable, and happy. And yes, our teachers have taught us the journey of our brave soldiers in a very fun-filled way. Our Standard 2 friends are ready to show their patriotism towards our nation and paying gratitude to our brave soldiers. I hope you all are also ready to witness the beautiful program. कभी ठंड में ठिठुरकर, कभी तपती धूप में जलकर, कैसे होता है हिफाजत मुल्क का, कभी सरहद पर चलकर, देख लेना. So please welcome with a huge round of applause. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर
ख्वाहिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह जिंदे बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह जिंदे बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे थर थर कंबदे सारे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में दिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
रेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू। कहते हैं कि बारिश ऐसी हो कि समुंदर में तूफान आ जाए। कहते हैं कि बारिश ऐसी हो कि समुंदर में तूफान आ जाए और तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जान आ जाए। So please have a big round of applause for the students of class 2. आदर, अभिनंदन और आभार. A very good evening to one and all present over here. I, Shivam Devta, and I, Janvi Behra, once again welcome you to this melodious evening. Education is not accusation of knowledge, but formation of character. It is the most significant requirement for an individual to grow and progress. Therefore, it's rightly said, education is the most powerful weapon we can use to change the world. There might be many ups and downs in the whole process of education, but one should keep in his or her mind, we should never give up in our life. हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के एक झलक लेकर आ रहे हैं क्लास 7 के कुछ डैशिंग और डायनामिक स्टूडेंट्स। So please have a big round of applause for them. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे पास आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि 5 दिन बाद आप सबके सेकेंड प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू मैम। एग्जाम सिर्फ 5 दिनों में है। वही मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब ऐसे में 12 चैप्टर के लिए 12 रातें लगेगी। वही शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे
एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लानी ही है, तभी शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा कर की है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पर हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया all is well, अरे भैया all is well, अरे चाचू all is well, अरे भैया all is well। भगवान प्लीज इस बार मैथ में पास करा दे, मैं मम्मी पापा की सारी बातें मानूंगा। हे भगवान प्लीज इस बार पास करा देना, मैं बदमाशी पूरा छोड़ दूंगा। हे भगवान ये तेरे और मेरे बीच में सीक्रेट है, इस बार बस पास करा दे, मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, अगर हम जमकर मेहनत करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमारे मेहनत का अच्छा परिणाम दे। हमें हमारे लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण करना चाहिए और सफलता हमारे कदम जरूर चुने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। So basically आज आप सबके रिजल्ट्स आ चुके और मैंने देखा कि 5 स्टूडेंट्स 90 पे अबव रखे हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया, तो सबके लिए तालियां। अरे तू इतनी उदास क्यों है? मेरे एग्जाम्स में सिर्फ 92% आए हैं, पर मुझे 98% चाहिए थे। अब लगता है कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मेरी टॉप की कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगी। अब लगता है कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो क्या, आगे बहुत कुछ बचा है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम 98% नहीं बल्कि 100% लाओगी और टॉप कॉलेज में भी जाओगी। तुम में वो बात है जो और किसी में नहीं है। हम पैदा बढ़ने के लिए हुए हैं, ना कि दबने के लिए। उठो चलते हैं। चलना पूछना पूछ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, 2 बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे रास्ता बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो राह में रुकना न जाने। कामयाबी कदम चूमती है जो है अपने मंजिल के दीवाने। मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर
से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कामयाबी के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Thank you, children, for your beautiful performance. Didn't you enjoy it? Yes, I enjoyed the performance a lot. Good evening, everyone. I am Arman Pradhan of Class 3. And I am Veronica of Class 3. हम कितने भाग्यशाली हैं ना? इतना अच्छा स्कूल, इतनी सारी सुविधाएं. And look, we are celebrating such a grand annual function as well. सही कहा यार. We are really blessed and fortunate. But do you know? A large section of our country's children are not privileged, getting even the most basic rights like education. Kya? Who are they? They are children like you and me. Millions of them who have to sacrifice their childhood just to fill their stomach and even for their families. Really? यकीन नहीं होता? आपको भी यकीन नहीं होता? So let's have a glimpse on the plight of child laborers portrayed by our friends through a dance drama. भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी?
छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी जंग जैसे मम्मा नानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुबह खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी। तारे ज़मीं पर। बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ। बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। और एक माइक। My dear friends, we should be well aware of this problem and take some positive steps to remove this issue from the society and rehabilitate the affected children. Yes, by providing the right to education and spreading awareness are the first step in this regard. So let us all join our hands and spread awareness about child labor. Thank you and have a fun time ahead. Wishing you all a very happy and a prosperous new year in advance. वाह, कितनी सुंदर प्रस्तुति थी। इसके लिए तो जोरदार तालियां बजनी ही चाहिए। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आराध्या प्रियदर्शिनी और मैं आराध्या पंडा इस समायन के रंग बिरंगे खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत है। अरे आराध्या, तुम्हें क्या हुआ? मैं मेरे मम्मी पापा से नाराज हूँ। क्या मम्मी पापा से नाराज? भला उनसे कोई नाराज होता है? वे तो
हमारे जन्मदाता है, वे तो हमारे शुभचिंतक है, वे तो भगवान तुल्य हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें एक प्यारी सी दुनिया में ले चलती हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कक्षा चौथे के बच्चों का, जो लेकर आ रहे हैं भगवान का दूसरा रूप। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिश नहीं। अपने पापा को ऐसा मत बोलो, हम अपनी जी जान लगा के तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे। पापा मम्मी की मेहनत को अनदेखा कर देते हैं, मगर उनकी जैसा फिक्र शायद ही कोई इस दुनिया में हमारे लिए करे। मम्मी, दिस इज फॉर यू। लाडो, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, ला ला ला, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है
बजनी चाहिए। जी हाँ, इस सुंदर प्रस्तुति को देख के तालियां तो बजनी ही चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ उज्जवल और मैं हूँ अभिप्सा। इस सर्दी में अगर ताली बजाए तो सर्दी भी डर कर भागेगी। ठीक है उज्जवल, मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ? मुझे पढ़ाई करना है और मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है। क्या हम केवल पढ़ाई से ही अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत माध्यम है। तो बोलो ना। तो चलो चलते हैं डीएवी और देखते हैं कैसे हम अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए क्लास 5 का, जो लेकर आ रहे हैं दिल ये जिद्दी है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आतश तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये मुर्रादा आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर बीच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है।
जाओ जाओ पहले। Hello, Arrow. How are you feeling at the annual function today? Now I'm getting very angry. What has happened to this world? Everyone, instead of talking, are using emojis to express their feelings. Hey, Arrow, let's talk now. So, how much addicted are you to mobile phones? It's not that serious, but sometimes I do. Don't you get on phone too? Yes, I play a lot of video games when my parents are away. So, now you know, we, the students of class 6, with our team are here to execute our idea on social media and its impact in our life through an act. So, let's start #social media. मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था, लेकिन मैं भूल गई। बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाके उनसे पूछ लो ना। ओके ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं, मैं तब तक नेट पर कुछ सर्च ही कर लेती हूँ। ओह गॉड, ये क्या हो गया? आज फिर से मेरा अकाउंट हैक हो गया। ये सब कैसे हो गया? मैं क्या करूं, किससे हेल्प लूं? देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में वेलकम टू द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को न देखो, किसी को न सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और
इतना ही नहीं, इसके बिना तो जैसे किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अपरे, इसने तो हद ही कर दी है, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने। नींद चुराए तेरी इसमें सनम, चैन चुराया तेरा इसमें सनम। ऐसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदियां हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदियां हर मैदान फतेह। Thank you guys for the wonderful performance. A very good evening, everyone. Isn't it a captivating performance by our 6th graders? So, we have seen the effect of social media on the society through this dance. Social media is a revolutionizing communication. Nevertheless, it indeed has risks that we need to be aware of. The more time we spend on social media can lead to cyberbullying, social anxiety, depression, and exposure to content that is not age appropriate. So, as parents, please ensure the internet safety and set boundaries right away when you give your child their first phone. So, let us disconnect to connect from social media. Thank you for your patient hearing and support. Signing off from Jishnuta. Hiteshi, over to you. शुभ संध्या, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे कार्यक्रम का संदेश तो आप सभी को स्पष्ट हो ही चुका होगा। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि हम आप सबको आज के इस डिजिटल संसार में उत्पन्न होने वाली विपत्ति के बारे में जागरूक कर सके। इन अनेक विपत्तियों में एक बहुत बड़ी मुश्किल है मोबाइल एडिक्शन। आज के दिन में हर बच्चा और बूढ़ा हमेशा अपने मोबाइल फोन से ही चिपके रहता है और अलग हो ही नहीं पाता। मोबाइल की लत एक बहुत बुरी आदत है जिसका हम पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। कोई विशेष कार्य न होने पर भी हम मोबाइल का स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं।
हाँ, मैं मानती हूँ कि आज के आधुनिक संसार में हमें मोबाइल की आवश्यकता है, लेकिन उसकी लत लगना हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस मोबाइल का सदुपयोग करके अपना जीवन नष्ट करने की गलती कभी मत करिएगा। उसका सदुपयोग करके अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। उसका दुरुपयोग करके अपना जीवन नष्ट करने की गलती कभी मत करिएगा। मैं यहाँ पर बैठे सभी माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी अपने बच्चों को इस बुरी आदत से बचाएं, क्योंकि एक बार ये लत लग गई तो छूटना मुश्किल होगा। और इस बुरी आदत से बचने का पहला कदम आज हम 6ठी कक्षा के छात्र एक प्रण के माध्यम से उठाने वाले हैं। आज आप सभी को कृपया प्रण के लिए उठ जाए प्रिंसिपल सर के विश के हिसाब से। आज हम सब बच्चे यह प्रण लेते हैं कि हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे तथा अपनी पढ़ाई मन लगाकर करेंगे। धन्यवाद। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाएं। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाएं। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाएं। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। I Shalini Kar and I Pratha Shinde welcome you all on behalf of class 8 on this special occasion. वाह शालिनी वाह, क्या शायरी सुनाई है तुमने। अगर तुम्हारा शायरी सुनकर तो मुझे भी कविता सुनाने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं सुना सकती हूँ? हाँ जरूर। गूंज रहे तेरे तट पर गंगे गौतम के उपदेश, ध्वनित हो रहे इस लहरों में देवी अहिंसा के संदेश। विजय चंद्रगुप्त के पद पर सेल्यूकस का वह मनोहार, तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्जवल बहार। चल अतीत के रंगभूमि में स्मृति पंखों पर चढ़ अनजान, विकलचित सुनती तू अपने चंद्रगुप्त का क्या जयगान। वाह पृथा वाह, क्या पंक्तियां सुनाई हो। लेकिन तुम इन पंक्तियों से किस विषय में संकेत करना चाहती हो? तुम्हें पता है शालिनी, मैंने उसको सिर्फ लोगों से ही सुना है, किताबों में पढ़ा है कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है। पर असल में क्या है महत्व गंगा का हमारे जीवन में? क्यों हिंदुस्तान के जीवन के किसी न किसी पहलू का हकीकत छू ही लेती है गंगा? गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक फैली है गंगा। क्यों हिंदुस्तान के पवित्र नदी को जितना सम्मान दिया जाता है, क्यों उसका अपमान उससे भी कहीं ज्यादा किया जाता है? क्यों वो गंगा जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को अपने प्यार और दुलार से सींचती आई है, क्यों आज उसका जीवन खुद संकट में है? क्यों भारत के हर कण कण में बसती है गंगा और क्यों हर भारतीय के रग रग में है गंगा? हर हर गंगे नमामि गंगे। Now, our very energetic and hardworking friends are going to entertain you all with their incredible dance performance. This dance is a tribute to all our Indian rivers. So, please pay attention over here, because if you'll blink, then you'll miss it. Now, hold your breath. Lights, camera, action!
आ, 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 भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे धरणतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। भागीरथी ने जिस गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाया है, जिन्हें हम माँ का सम्मान देते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उन्हीं को हम प्रदूषित कर रहे हैं। कपड़े धोकर, कूड़ा फेंककर आदि से हम उन्हें गंदा कर रहे हैं। विकास के नाम पर कारखानों से निकले गंदे पानी को सीधा नदी में छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं हमारी माँ गंगा कैसे प्रदूषित हो रही है। पिछले कई दशकों से हम विकास और प्रगति के नाम पर हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, पर अब वक्त आ गया है कि हमें यह अक्षम्य अपराध बंद करना होगा। इसमें वक्त जरूर लगेगा, पर हमें यह हमारी नदियों को बचाने के लिए करना ही होगा। हमें कारखानों द्वारा फेंके जाने वाले कूड़े को रोकना होगा। हमें नदियों में नहाना, कपड़े व बर्तन धोना भी बंद करना होगा। हम सभी को आगे आकर सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कूड़ा कचरा हमारी नदियों में जाकर उनके पेयजल को प्रदूषित न करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो न केवल हमारी नदियां प्रदूषित होंगी, बल्कि इस संसार से विलुप्त भी हो जाएंगी। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे कर्तव्य गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे।
it has become the call of the nation to save the Ganga, and very astoundingly the children have presented this message to incorporate and awaken the elders to realize this, internalize this, and practice it into action. Now I take the opportunity of inviting Sri Fakirmohan Sahu sir, Principal Savitri Jindal, Anugul, who happens to be the representative of the Regional Directorate, DAV Institutions, Odisha Zone. Sir, please. Good evening all. Respected plant head, chairman LMC of the school, Mr. K.S. Sudarshan ji, all the dignitaries, parents, PTCC member, teachers and lobbying students. On behalf of Honorable Dr. K.C. Satwathy, Regional Director, DAV Institution, Odisha Zone, I wish good luck to particular this school. With the dynamic leadership of Mr. L.K. Devta, the school is doing good both in curricular as well as in co-curricular activities. On behalf of Regional Directorate, DAV Institutions, Odisha Zone, I do express my gratitude and thankfulness to NTPC management for cooperating and helping in all the activities of the school. Thank you all. Thank you very much, sir. Now I request the budding instrumentalist of DAV NTPC Kania to present a theme-based instrumental presentation. Now over to Dilip sir.
Sorry for interruption. It has come to our notice and some spoken complaint of the parents that few parents are loitering at the front and making photos which is making inconvenient to What other a audience splendid to watch. performance by the 8th graders. Let's give them a thunderous round of applause. Good evening, everyone. I am Janvi Asar. Without water, we will die. We can save water in many ways so that it can remain preserved for future generations. So here we are presenting a song to all of you which tells about the emotions of water. Thank you. Yes, sir. बस सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी ये चुपचाप पानी क्यों चलो बदलते ये कहानी कहानी बचा लेने
सबका हाथ तुम स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी स्वच्छता और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी ये वक्त की पुकार है तुम मिल के चलो, ये वक्त की पुकार है तुम मिल के चलो, जिंदगी का राज है कि तुम मिल के चलो, तालियां बजाते चलो, सर्दी को भगाते चलो। वाह क्या शानदार प्रदर्शन था जिसने हमें जल के महत्व के बारे में बताया। इनके लिए तो जोरदार तालियां बजती ही रहनी चाहिए। वैसे मेरी पार्टनर पाखी कहाँ गई?
हाय श्रद्धा। हाय पाखी, अब तक तुम कहाँ थी? अरे क्या बताऊं, रास्ते में जाम लग गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जाम किस बात का था? कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए वहाँ काफी भीड़ जमा थी। ओह, ये तो बहुत आम बात है। अब लड़कियों को समझना भी तो चाहिए कि देर रात गई, घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को क्यों समझना चाहिए, इसका उल्टा क्यों नहीं, हमें लड़कों को समझाना चाहिए कि लड़कियों और औरतों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। तो आइए इसी विषय पर कक्षा 9वीं के छात्र द्वारा नृत्य और नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्लास 9 का समय की पुकार। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ ला रही हूँ, ये लो। थैंक यू माँ, बाय बाय बेटा। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे मेरे कॉलेज के लड़कों ने छेड़ा और मेरे से बदतमीजी की। तुम्हें उन लड़कों के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले ही कहा था लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत रखो। शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। संस्कार जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। बेटा, इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल। कहना चाहती हूँ कि आजकल हम सिर्फ गलत डायरेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे। We should save our boys because if we save our boys, our girls will be safe. इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद।
सही में सानिया, नारी सशक्तिकरण का क्या अनोखा प्रदर्शन किया है कक्षा 9वीं के छात्रों ने। हाँ, सही कहा तुमने प्रियंका। तो इसके लिए एक जोरदार ताली तो बनती ही है। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सानिया एंड दिस इज प्रियंका। हमने इतने सारे सामाजिक मुद्दों के ऊपर कार्यक्रम देख लिए, क्या कुछ स्कूल के दिनों के ऊपर नहीं हो रहा है? स्कूल का एनुअल फंक्शन हो और स्कूल के ऊपर परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? स्कूल के दिनों की खट्टी मीठी यादें तो हमारे ऑडियंस के पास होगी ही। ऑडियंस, स्कूल के मेमोरीज है कि नहीं? कुछ जोश नजर नहीं आ रहा, ऑडियंस है कि नहीं? तो आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी आ रहे हैं हम सभी स्कूल के दिन कक्षा 11वीं की खट्टी मीठी पलों को आपके साथ बांटने और आपकी यादों को ताजा करने। So give a huge round of applause and welcome the students of Standard 11 presenting स्कूल के दिन कक्षा 11वीं, जो नाटक, नृत्य और संगीत के माध्यम से समायन की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। खोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह आओ चल करे। हमको चबाते जाए, सबको बताते जाए अपनी हसरतें। यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से। भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 ना। सीखेंगे हम ये यही है क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 आएंगे ना। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई हम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। 11वीं कक्षा में आकर कैसा लग रहा है जमूरों? कुछ लूटा फिटा सा महसूस कर रहा हूं मेरे आका। मतलब 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 ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रेशर में दब जाऊंगा मेरे आका। कैसा प्रेशर है जमूरों? सोसाइटी का, टॉप ना कर पाने का, मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस का, सिर झुका के रात भर पढ़ने का, एंजाइटी का यार, एग्जाम्स में फेल हो जाने का, सब चीजों का प्रेशर है मेरे आका। सिलेबस से डर लग रहा है जमूरे। इधर तो पूरी लाइफ ही आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है मेरे आका। अरे इतने प्रेशर में रहोगे तो एडल्टिंग, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटोगे? हैं? कैसे निपटेंगे? कैसे 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 निपटेंगे ये तो मालूम नहीं, पर इतना जरूर मालूम है कि कहीं इस प्रेशर से निपटते निपटते कहीं खुद ही ना निपट जाए मेरे आका।
ये डर जरूरी है झमुरे, क्योंकि डरोगे नहीं तो जीतने के लिए लड़ोगे कैसे? इस मुश्किल रास्ते में गिरोगे नहीं तो उठकर आगे बढ़ोगे कैसे? परीक्षा इम्तिहान नहीं, त्योहार है। पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई ज्ञान की खोज है। वो सब तो ठीक है मेरे आका, लेकिन पढ़ाई में ध्यान कैसे दूं? पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई का ध्यान रखो। कोशिश पे कोशिश करो, और कुछ ना हो तो दिल की सुनो। हाँ हाँ बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। वो सब तो ठीक है, पर ये सब होगा कैसे? अभी बताते हैं कैसे। रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Wait everyone! देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om.
So today we had made a special request to the chief host of the evening and the chairman of SMC to make a special announcement. Sir, please. Good evening, all. It was a great evening. Well, I was told tomorrow the school is celebrating its annual alumni meet. Hence, classes are suspended tomorrow. However, I declare 28th December 22 as a guest holiday for all the students and staff members. The summary is, from tomorrow onwards, school is closed for students. Now I invite the Cultural Secretary of the school, Ms. Sania Saipriya Sahu, to come and propose the vote of thanks. Gratitude glitters like gold when time make memories everlasting. On an occasion of such great magnitude, thank you is all that take to express gratitude infinite. It is my proud privilege to propose the vote of thanks to this December gathering. Our annual day celebration has become very special by the presence of our chief guest, the Director Education Officer, Shri Niranjan Sahu. I thank you, sir, for your precious timing. I would also like to thank the chief host, K.C. Sundaram, sir, Executive Director cum Chairman SMC. My sincere thanks to all the dignitaries and all the well-wishers who were here to encourage us. I would also like to thank Mr. Ashok Segal, GM Operation and Management. I would also like to thank Mr. B.K. Pandey, AGM HR. My special thank to Shri Fakir Mohan Sir, the Principal DAV Saraswati Jindal, representative of Regional Directorate. I would also like to thank all the GM, AGM, NTPC officers, all principal, special invitees, CMC members, PTCC members, and all the cabinet members. I would also like to thank our principal sir, Mr. L.K. Devta sir, who has been a pillar of strength and support. My wholehearted gratitude goes to the coordinator of this event, Mr. Pratap Kumar Mr. Sir. I would also like to thank the entire teacher faculty for their vital role in the overall development of the student community. I sincerely thank all our non-teaching staffs from the administrator, maintenance and transport for their valuable contribution. And gratitude to also all our parents for their cooperation and guests for being here this evening. My special thanks goes to two technicians, Vidhi Vishnu and Ritesh Sahu, for managing the whole event. Last but not the least, a big thanks to all the participants and fellow students for their wholehearted participation. Thank you one and all and have a pleasant evening. Thank you very much, Sania. Now I request everyone to stand in attention for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
रहे। Thank you all, and in advance to everyone, a happy new year 23. Thank you all. Good night.